Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is PMS, subject Social Studies, grade 7, lecture number 24. Transport and Communication, chapter number 7. Today we will start chapter number 7, Transport and Communication. Open your books, page number 34, 35 and 36. So what is mean by transport? Transport or transportation is the movement of humans, animals and goods from one location to another. Transport or transportation is the movement of humans, animals and goods from one location to another. What is mean by communication? Its Urdu meaning is mawaslat. Communication is the process of passing information and understanding from one person to another. In simple words, it is a process of transmitting and sharing ideas, opinions. Opinions mean rai, facts, values. Values mean aqdar, etc. From one person to another or from one organization to another. Communication is the process of passing information and understanding from one person to another. In simple words, it is the process of transmitting and sharing ideas, opinions, facts, values, etc. from one person to another or from one organization to another. So we will take start from transport and communication. Your book page number is 34. In the past, almost everything that ordinary people mean log, needed was grown or made locally. Locally mean makami satah par. Today, we use goods from other parts of our own country and more especially from the other countries. माजी में इंसानों की जो ज़रूरियात थी वो मकामी सतह पर ही पूरी हो जाती थी क्योंकि ज़िंदगी बहुत सादा थी। लेकिन आजकल हम अपने इलाके के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में बनी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। खासकर दूसरे ममालिक की चीज़ें भी हम अपने मुल्क में हासिल कर सकते हैं। Why do you think this change has occurred? आपके ख्याल में इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह क्या होगी या ये तब्दीली क्यों वाक़या हो गई? Answer is the standard of life has improved so dramatically that what are now seen as essentials mean जो ज़रूरी होती हैं cannot all be manufactured or supplied locally. Early life was very simple, with people growing their own food and making simple goods. Not every region has the resources or skills to make TVs, automobiles, and thousands of other things we consider an essential part of everyday life, so they have to be brought in either from different parts of the same country or from abroad. By land. This is obviously the oldest means of transport. ये यकीनन ट्रांसपोर्ट का सबसे पुराना जरिया है। Roads ranging from simple earth tracks to giant mean बहुत बड़े बड़े vehicle, motorways or
the lifeline of society today. जमीन की सादा सड़कों या रास्तों से लेकर देवहेकल यानी बड़े बड़े मोटरवेज तक सड़क मौजूदा जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। Roads are expensive to build and keep in good repair, but have the advantage that they can be built almost everywhere. रोड को बनाने और अच्छी हालत रखने के लिए यानी इसकी मरम्मत करने के लिए इस पर काफ़ी अखराजात आते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सड़कें कहीं पर भी बनाई जा सकती हैं, चाहे वो प्लेन एरियाज हो, चाहे वो डेजर्ट एरियाज हो या चाहे वो माउंटेन एरियाज हो। Motor vehicles can load up at the factory or farm and carry the goods quickly and directly to where they are needed, whether it is the market or a distant town or to a seaport. Seaport means bandargah for export. मोटर गाड़ियाँ फैक्ट्री या फॉर्म में लोड की जाती है यानी इसमें सामान डाला जाता है, फिर इसे फौरन वहां पहुंचाया जाता है इस सामान को जहां इसकी जरूरत होती है, चाहे वो मार्केट हो या कस्बा या बंदरगाह जहां से गुड्स को यानी सामान को एक्सपोर्ट के लिए रवाना किया जाता है। People can get on their motorcycles or into their cars and travel. इसके अलावा जब किसी के पास अपनी गाड़ी या बाइक होती है तो वो बगैर किसी बस या ट्रेन का इंतजार किए बगैर आसानी के साथ फौरन जाकर अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है। Now look at the graph carefully on your book page number 35. Look at the graph on page 35 which shows the development of roads, highways and the railways. There is an increase in the distance covered by roads and highways from 80,000 km to almost 1 lakh km, that is less than 1 lakh 20,000 km, but the increase in the distance covered by highway is remarkable. It is doubled from 80,000 km to over 1 lakh 60,000 km. Use of the roads and railways for the movement of freight and passengers. Freight means malbardar, goods transported by trucks, trains, ships or aircraft. Look at to the next graph on page 35. There is a remarkable increase in the number of passengers as well as freight. Transport is more rapid on roads rather than rail, and transportation by trucks and containers is more convenient. As you can see, this graph on your book page 35 also give attention to the fact that there has been a rise in the number of vehicles, especially motor cars and motorbikes, roads and highways, but there has been less or no increase in the extension of roads or railways.
Use of roads for movement of freight and passenger has increased as compared to rail. Railways. These were the first mass transit means of transport. Mass transit, public transport. Railways is the first means to use as public transport. They are expensive to build and maintain, but they can carry huge amounts of goods and passengers fairly cheaply over long distances. इसको बनाना यानी रेलवेज को बनाना और फिर उसको अच्छी हालत में बरकरार रखना काफ़ी महंगा है, लेकिन ये बहुत दूर दराज के इलाकों तक मुसाफिरों और सामान को सस्ते दामों पहुंचाते हैं। In France and Japan, the latest trains can travel for hours at well up to 350 किलोमीटर पर आवर। फ्रांस और जापान की जो ट्रेनें हैं वो 350 किलोमीटर की रफ्तार से घंटों तक सफर कर सकती हैं। Today, however, railways are declining as a popular means of passenger transport, but goods trains are still important for carrying heavy loads such as stone, coal and iron ore. अगरचे रेलवेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैसियत से आजकल अहमियत खो रहा है, लेकिन सामान ले जाने के लिए अभी भी इसकी काफ़ी अहमियत है, खासतौर पर पत्थरों को, कोयला या आम लोहे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अभी भी रेलवेज की बहुत अहमियत है। Look at the pictures of railways. Railways. The railway system in the subcontinent was set up by the British. They laid tracks from west to east and north to south across the land, thus connecting people, providing safe transport and moving cargo. Cargo means सामान ले जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं। At independence, Pakistan, both west and east, had an effective railway system, although it was given fewer, fewer engines and carriages. Railways were developed further in 50s and 60s, but with constructions of highways and use of road transport for goods and people, the railways were neglected, mean not pay proper attention. There was no increase in the development of railways, which have remained the same from 1992 to 2006. The current situation mean मौजूदा हालत of the railways in Pakistan is not encouraging. The causes for the fall in the rail traffic are now many more people use buses or have their own cars, which is much more convenient for shorter journeys as well as flexible in the terms of routes. Freight by rail has fallen because using trucks is easier as they can go directly from the factory or warehouse to the delivery point, whereas
If the railway is used, goods have to be loaded onto trucks to take them to the station, then onto the rail, and finally at the end unloaded onto the trucks or vans for delivery. Trains are more suitable for substances such as coal or cement, which are heavy and can be taken directly without unloading. Pipelines. Pipelines are a means of transportation especially useful for moving oil, gas, and petroleum within a region. Pipeline is also used as a means of transportation खासतौर पर तेल, गैस या पेट्रोलियम को इलाके में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए as a means of transport pipeline use होते हैं. They are made concrete, steel, and today even plastics and can measure up to 10 meters in diameter. The more usual ones are about 2 meters wide. ये पाइपलाइंस कंक्रीट की भी हो सकती हैं, स्टील की से भी बने हो सकते हैं और आजकल प्लास्टिक्स के भी बनाए जाते हैं और डायमीटर में 10 मीटर की पैमाइश के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 मीटर की चौड़ाई वाले इस्तेमाल किए जाते हैं. They are expensive to build. अगरचे इसके बनाने पर काफ़ी खराज आते हैं. Once made, they are cheap to run using far less labor than required by trains and buses. लेकिन रेलगाड़ियों या बसेस में जितनी ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती है, पाइपलाइंस में इतनी मज़दूरों की ज़रूरत नहीं होती. इस वजह से ये हमें सस्ती पड़ती है. They are however need a booster station about every 80 kilometers. लेकिन इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है और वो है बूस्टर स्टेशन. तकरीबन हर 80 किलोमीटर के बाद इसे एक बूस्टर स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है. What is a booster station? A booster station is a large pump which gives the liquid or gas another push along the pipes. फ्लो को बरकरार रखने के लिए बूस्टर स्टेशन क्या करते हैं? It means a booster pumps is like a machine which will increase the pressure of a liquid, which will increase the pressure of a fluid in pipes to keep it moving towards its destination. That is why a booster station is the most requirement of pipelines. Pipelines can go straight from the point where the liquid or gas is produced to the place where it needed. जहाँ पर तेल या गैस की ज़रूरत होती है, पाइपलाइंस के ज़रिए ठीक उधर तेल या गैस पहुंचाया जाता है. There are no chance of stealing goods as there is in train and road transport because the substance flowing along them are not in usable form. In any case, it would be quite impossible to control the flow of the pipe if uh, it it would be quite impossible to control the flow if the pipe was opened. इसमें जिस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट या रेल्स में चोरी के इम्कानात होते हैं चीज़ों के, इसमें चोरी के इम्कानात तकरीबन नामुमकिन होते हैं क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस फ्लो करता है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता. और अगर इन केस पाइप को खोल भी दिया जाए तो
तो इसके बहाव पर काबू पाना काफी नामुमकिन है। Look at the pictures. You can see pipelines. Air travel. Air travel. This is very important for long distance travel, either inside a country or to other countries. बहुत दूर तक सफर के लिए बहुत ज्यादा एयर ट्रैवल मुनासिब है, चाहे आप सफर मुल्क के अंदर करते हो या दूसरे ममालिक के लिए आपने जाना हो। इट इज़ एक्सट्रीमली क्विक एंड कन्वीनियंट। ये बहुत ज़्यादा तेज़ और आसान होता है। वन कैन ट्रेवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू लंदन without stopping in 7 hours, whereas whereas a journey by land or sea would take more than a week. ये कैसे हमें जल्दी और आसान पड़ता है? एक आदमी बगैर रुके इस्लामाबाद से लंदन 7 घंटों में पहुंच सकता है, लेकिन अगर यही सफर आप बजरिए रोड या बाई सी करना चाहे तो इसमें 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन एयर ट्रेवल की वजह से वो सफर हमें कितना आसान पड़ता है, ओनली इन 7 hours। For cargo, air travel is very important for carrying mail, goods of high value such as jewelry and urgent medical supplies. कार्गोज यानी सामान ले जाने के लिए हवाई सफर बहुत अहम है, खासतौर पे जो मेल होता है, कीमती सामान जैसे कि ज्वेलरी हो गई या कहीं पर इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पे तिबी इमदाद पहुंचाई जा सकती है। एयर ट्रैवल इज ऑफ कोर्स फेयरली एक्सपेंसिव। अगरचे एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा महंगा है, but its advantages usually far outweigh this disadvantages। लेकिन इसकी खूबियों ने इसकी इस हामी को छुपा लिया है, यानी इसकी खूबियाँ इसके नुकसान से कहीं ज़्यादा है। Look at the picture. Now it's time to note your homework. Do reading of page 34 and 35 and 36.